important work of shaping the development discourse of this country under the leadership of late Professor Omyobakji. So we are very, very excited that with the new directions that we are taking. So I take this opportunity to thank the dignitaries on the dais, people who've been with us, who've stood by us for the new initiatives that I basically even the people from humanities and commerce together, and I'm also very happy that it is this new center for Rabindranath Center for Climate Change and Sustainable Development has ultimately come up, and it is, I'm very happy because it is named after the poet Rabindranath Tagore, who was not just a poet but was an activist, a planner, an educationist, and what he has done during his Ashutosh Ghosh, Honorable President, Honorable Vice President, demonstrated through collaborative efforts, and the culminating point of that collaborative effort is our collaboration with IDSK, which for several decades is playing a very significant role as a knowledge hub, not only by providing useful data and information for the University of Calcutta, but also at the governmental level and also for inquisitive and budding scholars. Now it's a very crucial moment in our country when you see that the MPhil program has been discontinued. Many scholars and also activists, I will not name them for obvious reasons, they have mentioned that there is no encouragement for the researchers. Research environment is being challenged by certain hegemonic political institutions in our country, which is a travel. Eminent Institute of International Relations and also academics in Manager. So it's such a win-win scenario. So when I have been having the opportunity of tracking climate change as an academic, as a journalist for the last 15-16 years globally. I had the opportunity of covering the global climate conferences from 2009 onwards to the recent one. And I always thought that this is the appropriate time when some government level think tank to work on the issue of climate change. Climate change is not only about science, it's not only about commerce, it's an amalgamation of subjects, it's a cross current. And globally, if you look at the think tanks, they are working on various capacities, including journalists, my colleagues, a lot of media colleagues are in front of me. All of সবাই বলেছে এবং মানে আমি গর্বিত যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে আইডিয়া নিয়ে বিশ্বভারতী তৈরি করেছিলেন এবং তার যে ভাবনা যে তখন আর কি যখন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু মোটেই পৃথিবীতে ভাবনা চিন্তার স্তরে আসেনি, সেই সময় উনি ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে ভেবেছিলেন এবং মণি বিজয়ের কেতন উড়াও উড়াও এর শূন্যে এর জীবন পূর্ণ করো, এবং তিনি বৃক্ষরোপণ উৎসব একটা বিশেষভাবে শান্তিনিকেতনে যেটা পালিত হয়। তো আমার খুব মানে গর্ব অনুভব হচ্ছে যে আজকে এইরকমভাবে রবীন্দ্রনাথ টেগোর ইনস্টিটিউট এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ যেটা আইডিএসকের মাধ্যমে আমরা গুরুদেবের সেই চিন্তা। Today is a great day for us in the sense that we have made here to announce that very soon Institute of Development Studies Kolkata, or IDSK as it is popularly known, is going to introduce this year the Masters, the MA program in Development Studies, which is the first of its kind in this state, not only in this state, in the Eastern India itself. There are certain institutes in the country which offers master's program in development studies, but not in this part of the country. So in that sense, IDSK is taking lead, and this was not possible without the kind cooperation, collaboration of Calcutta University at the leadership of the current Honorable Vice Chancellor Professor Ashutosh Ghosh. Also, there are certain other developments which have taken place in recent time, which we also want to share. One is there is a center called Rabindranath Tagore Center for Human Development Studies, the basic idea of which is to
pursue research and related activism, taking in mind the ideals of the great poet philosopher Rabindranath Tagore, and also underneath we have started a new. आप क्या कहना चाहते हैं आने वाले जो कल है और आज का जो कल चल रहा है? जो आज हम लोग बताया, हम लोग कोशिश कर रहा है रिसर्च को, मैंने जो सोशल साइंस में होता है उसको वर्ल्ड लेवल में लेना चाहता है, लेवल का स्तर में लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए तो एक बेस तैयार करना जरूरी है, और बेस तैयार करने के लिए हम लोग बहुत दिन से सोच रहा था कि एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज, मास्टर्स प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टडीज़ में खुलना चाहिए। तो वो हम लोग खुलने जा रहा है इस साल से, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से। तो उसमें कोई भी डिसिप्लिन का लड़का और लड़की, छात्र और छात्रा लोग आ सकते हैं, वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इकोनॉमिस्ट हो, जो भी हो, वो पढ़ सकते हैं। तो इसका बहुत डिमांड भी है आजकल बाजार में। सर, इसको कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं जो बच्चे करना चाहते हैं? अभी तक कॉरेस्पॉन्डेंस हम लोग सोचा नहीं है, लेकिन उसको भी हमारा दिमाग में है। अब आने वाला 1 और 2 साल में शायद चालू कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। थैंक यू सर। सर, योर नेम? मेरा नाम है व्यासदेव दासगुप्ता, मैं IDSP का डायरेक्टर हूँ। थैंक यू सर। प्रसिद्ध रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज कोलकाता, इसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। ये IDS के काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई है, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर आशुतोष घोष और IDS के जो दूसरे लोग जो जुड़े हुए हैं सबको यहाँ पर आज मौजूद थे, और डायरेक्टर प्रोफेसर व्यासदेव दासगुप्ता। मैं IDS के का ऑनररी प्रेसिडेंट हूँ, और यह बताने के लिए हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी भारत में MA इन डेवलपमेंट स्टडीज पहली बार यहाँ IDS के में शुरू होने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, उसका हमने अनाउंस किया। दूसरी बात यह है, जो हमारे देश में ये क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स है, इसको सामने रखते हुए जो रिसर्च और डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत है, उसके संदर्भ में एक नया सेंटर, रविंद्रनाथ सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोगों ने आज घोषणा किया है। साथ ही साथ आगामी दिनों में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के ऊपर जादवपुर और JNU को छोड़ के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में IDS के में भी इंटरनेशनल रिलेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर मास्टर्स कोर्स शुरू करने की एक प्रक्रिया हम लोगों ने चालू की है। और इसके अलावा IDS के लिए और भी काफ़ी सारे स्टेप किए हैं, उसके बारे में लोगों ने आलोकपात किया। पश्चिम बंगाल देश का एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मामलों में सबसे अग्रणी रहा है। IDS की जो आज की जो जर्नी है उसी का पार्ट है, हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और ये शिक्षण प्रतिष्ठान का के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Moreover, if you see the path of art is not the spherical, not the circular, it is elliptical. But elliptical means that the distance from the sun to the earth is changing periodically, and so the sunshine which is coming to the earth, that is also changing. And with all these factors should be taken into account, but for one such cycle usually take about say 1 lakh year. So this is a kind of long-term climate change that every several times in this earth it happens. Moreover, nowadays you also know that Africa is splitting.
that now Africa is splitting. Always they are, this crust is always changing, and when there is a change in the crust, the sea will change, the new mountain will form, so climate will also change, because earlier, about 10 crore years ago, there was no Himalaya. So Himalaya is about 10 to 15 crore, the Himalaya started to form. So the climate has changed when the Himalaya was formed. So Sahara, once you will see that it was not a desert long ago. So always you will see there is a change of climate. So in Rajasthan, if you go nowadays, you will see a lot of trees in the Thor desert, because the climate in that part is also changing. So these things actually we cannot control. But what we can control the short-term changes. These short-term changes, mostly we are mostly concerned with the greenhouse gases, especially the carbon dioxide. That is very important. This is the one thing. And another thing is that what we should do, for the climate changes. Mining issue is also very important issue. Nowadays there is a war between the United States, Israel and Iraq, and you will see that lot